Hi guys, welcome back to your own channel. Today we'll find out what are the top 3 shares that a retail investor can buy and the logic behind it. So as you all know कि market अभी 10% down है year to date में. So this is the right time when we can start accumulating shares. But we need to start buying the shares at every dip, so that when the market continue to fall further, we can average out the share price. So अभी हम ये शेयर्स देखेंगे जो कि सेंसेक्स जितने या उससे ज़्यादा गिरे हो, ताकि वंस द मार्केट रिकवर्स एटलीस्ट हम 10 to 15% आराम से कवर कर पाए. और इस टाइम में वी शुड डेफिनेटली लुक आउट टू बाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ओनली, विच लाइक ब्लू चिप कंपनीज, so that even if the market continues to fall further, we can sleep in peace. So the first share that we should buy is Bajaj Finance. अगर आप Bajaj Finance का चार्ट देखेंगे तो वो एक साल में almost 25% डाउन है from its 52-week high. So this is the one share that we should definitely now start accumulating at every dip. Second share that we should buy is Asian Paints. Again ये भी सेंसेक्स जितना गिरा है 10.34%, and this is one of the best companies which had consistently given a better return over the last 20 years. So this is the second company that should be on our radar, and we should keep on buying this at every dip. Third share that we should buy is HDFC Bank, which again has fallen close to 15% from its 52-week high. Though it hasn't given so much return in the last 2 to 3 years, but this is the time we should buy these shares, so that once the breakout happens, ये एकदम अपने 52-week high पे जाएंगे, and all these companies are very safe companies. तो जैसे अगर आप HDFC बैंक का देखेंगे, इसका ROE और ROC दोनों ही 15% से ऊपर है, प्लस अभी HDFC बैंक ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट PE पे अवेलेबल है. सो अगर आप इसका PE देखेंगे, दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ टू दैट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड ICICI बैंक से भी सस्ता है. सो यही सही टाइम है ऐसे शेयर्स को बाय करने का. अगेन अगर आप एशियन पेंट सर्च करेंगे, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन. इसका अगर आप ROE और ROC देखेंगे तो ये हर कंपनी से ज़्यादा है अपने सेक्टर में, एंड अगेन इट्स अ मार्केट लीडर which has a consistent track record. So these are the top 3 companies that we should keep on our radar and should buy it at every opportunity. But हमेशा स्टैगनेंट वे में अप्रोच करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के पॉसिबल हो तो एक एक शेयर उठाते रहिए, ताकि बाद में हम इसको सही प्राइस पे एवरेज कर पाए. So hope you found this video useful, and kindly like and subscribe to this channel for such more videos. Thank you.